Good morning, dear students. So, today we will start from page number 44, the same chapter, that is the natural fiber, chapter 3. Okay, open page number 44. The topic for today's video is extraction of wool. Here are the pictures which are supposed to show us the process which we can see on the left side explained, and the picture related to it at the very right side. The first process involves the shearing. It involves the extraction of wool, involves basically 5 process. Okay, 5 process in which shearing, crouching, sorting, dyeing and final processing, these 5 processes have been involved. So let's start it with the process of shearing. Now, once the sheep have developed a thick coat of hair, the process begins with the removal of the hair along with thin skin layer. शेयरिंग की प्रोसेस में क्या होता है ना कि वंस द लेयर over the body of the ship has been developed, so what we do, we take it off along with a thin layer of the skin in order to carry out the process of wool, right? So shearing is generally done, मतलब it involves basically the removal of the hair along with the स्किन लेयर, थिन सी स्किन लेयर के साथ, और इसको आप बोलते हो शेयरिंग. ना शेयरिंग इज़ डन एनुअली इन समर मंथ. आप एनुअली शेयरिंग को कब करते हो? समर जो मंथ्स होते हैं तब करते हो, सो दैट बाय द टाइम इट इज़ विंटर एक न्यू कोट जो है हेयर्स की वो ग्रो हो जाती है टू प्रोटेक्ट द शिप्स फ्रॉम कोल्ड, एंड अगेन इन समर्स वी टेक इट ऑफ along with a thin layer of skin, and this process is known as shearing. Okay, next is scouring. Scouring process basically involved simply dipping it in warm water. whatever you have got from the first step, आप उसको second step में क्या करते हो? warm water में dip करते हो in order to get rid of all the dirt, that says grease, vegetable fats, whatever the present over the wool, you can say over the fleece. So you get rid of all those dirts and extra impurities in the second process. Now some of the lanolin is left intact. Intact मतलब रह जाना, remain रहना. And lanolin you can say the naturally fatty acid की जो layer होती है वो naturally fatty acid की layer. Okay. Third process is sorting. This process involves grouping of wool according to its texture into categories of fleece. Basically, in the third process, what we do in the third process, you categorize. You subdivide the wool as per the fleece, the thread, fiber, whatever you got from the skin of the sheep. You categorize that fleece into different categories as per their texture. It could be it is the quality of fleece that decides the grade of the wool according to उसकी लेंथ क्या है, टेक्सचर, कलर, स्केल, स्ट्रक्चर एंड फाइननेस, उसके हिसाब से आप उसको कैटेगराइज करते हो. एंड द अदर 4 कैटेगरीज आर पैकेज्ड एंड सोल्ड सेपरेटली. फिर जो भी आपकी 4 कैटेगरीज होती हैं आप उसको जैसे बल्क पीसेस, बैलीज, क्रचिंग, लॉग्स, दिस आर दी कैटेगरीज. जो भी कैटेगरीज होती हैं आप उनको पैक करते हो और एज पर देयर प्राइजेज यू यूज़ टू सेल देम. थर्ड वन इज़ clear. Now fourth one involves the fiber dyeing, basically giving the color to the given matter from the shape. Final step, final processing involves the fiber are strengthened by putting them through rollers. जो fibers आपने collect किए होते हैं आप उनको stretch करते हो रोलर्स की हेल्प से. आफ्टरवर्ड्स यू ट्विस्टेड देम इनटू अ यार्न. यार्न क्या होता है? एक मतलब फाइबर्स को आप लॉन्ग लेंथ में इंटैक्ट करते हो, बाइंड करते हो, उसको आप बोलते हो यार्न. एंड ये जो यार्न्स होते हैं वुड टू फॉर्म बॉल्स ऑफ वुल यूज फॉर निटिंग और वीविंग वोवन क्लॉथ्स. और इन यार्न्स का आप यूज़ करते हो फॉर्म करने के लिए
बॉल्स ऑफ वुल, वुल के बॉल्स को फॉर्म करने के लिए यू जनरली मेक यूज़ ऑफ दिस yarns to make the balls of wools and afterwards in the process of weaving woven clothes. I hope कि this particular process of extraction of wood has been very much clear by me. If you still faces any doubt, you can ask me in our live session tomorrow. Till then, bye and take care.